Assalamualaikum, मेरा नाम कैवान हामिद राजा है. I am the director of strategic communications and PR for ABT Channels network of channels, and I'm part of the management. It's a family business as well, so I'm running these 4 television channels apart from the other responsibilities such as anchoring and productions at the same time in that network. So that's my production apart from being थैंक यू. अच्छा जी, मेरा नाम मरियम कैवान है. इंट्रोडक्शन में आपको बताती चलूँ, आई स्टार्टेड प्रोफेशनली. आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी थी. उसके साथ साथ मैंने स्टेट टेलीविजन पे एंकरिंग शुरू कर दी. दैट्स हाउ द एवेन्यूज ओपन फॉर मी. उसके बाद कुछ स्टिल शूट्स मॉडलिंग भी की. उसके अलावा कुछ इवेंट्स होस्टिंग मैंने काफ़ी की ऑन कॉर्पोरेट लेवल विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. इवेंचुअली K2 के साथ मैंने काम करना शुरू किया एंड वहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई. गॉट मैरिड इवेंचुअली एंड नाउ आई एम अ मदर ऑफ 2. उनको भी संभालियो. मदरहुड इटसेल्फ इज अ बिग जॉब. हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो देख रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी है. एंड उसके साथ साथ हेल्पिंग हिम मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ी चीज़ें कर रही हूँ. ऑन माई ओन आई एम डूइंग सम प्रोडक्शंस. अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ. दैट इज इंटरव्यूज बेस्ड, जो मेरा फोर्ट है उसी के साथ खेलूँ. So your first question, what skills should someone in your field have? क्या जरूरी है? PR skills are very important, and they need to be creative to some extent, and they need to be very flexible because it's not going to be the same work on every day or separate days, different work. So they need to be very flexible. They need to have good PR skills, and they need to be very energetic and willing to work 24/7. 24/7 is the main thing क्योंकि कोई working hours नहीं हो इसमें. Right. Okay. Yeah. How do you ensure that your interviews are captivating and informative? अच्छा, इस पे I actually do some research और मैं हमेशा ऐसे questions plan out करती हूँ. एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि I don't go होता है ना, आप randomly जाके बैठ जाएं और आप अपने जो आपके गेस्ट हैं उनसे सवाल करना शुरू कर दें. आई डू माई होमवर्क, आई डू माई रिसर्च और मैं ये खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ कि इनसे क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे देखने वालों को बेनिफिट मिलेगा उससे. सो आई ट्राई टू पिन पॉइंट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. और इसी तरह से आई थिंक होमवर्क एंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जिस भी लेवल पे पहुंच जाएं, going just like that blank face, it doesn't do justice to your Sounds a lot like me. I go completely blank. I don't prepare for anything. and I would like to tell this to people as well. मैं इनको हमेशा कहती हूँ, मतलब जब ये बड़े important guests या बड़े sensitive topics, for instance अभी जैसे आप अफगानिस्तान related issues discuss में कहती हूँ कि आप अपने facts क्या कह रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बात ना कह रहे. You know, you have to be careful with your words because you're catering to a specific sensitive crowd. तो ये आप फिर भी कैसे कर जाते हैं? इसको कहते हैं getting away with murder. It's a risk, and through experience, I think you can, with time, take risks. That's not part of the question. Okay, next. Okay, yeah. It's my turn. Upon your learning and experience, what advice can you give to other people? अपने लंबे तवील experiences के कुछ. इतना भी लंबा नहीं है. I think the closest thing to me would be no failure is enough to get you down. No struggle, no tragedy, personal हो, professional हो, आपका जितना भी बड़ा failure हो, उसके बाद getting back up and realizing your potential that is where your actual passion lies. And मैं ये personal experience इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने academically fail करके देखा है, मैंने professionally काफ़ी failures encounter किए, मैं personal level पे काफ़ी ज़्यादा struggle कर चुका हूँ. उसके बावजूद the fact that I grew up with it, मैंने उनको छुपाने की कोशिश नहीं की. मैंने उनको अपनी ग्रोइंग और अपनी ग्रोथ का हिस्सा इस तरह बनाया कि मैंने उसको मार्केट भी किया, मैंने उसको फ्लॉन्ट भी किया और मैं बहुत प्राउडली उस चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दोस फेलियर्स, व्हिच इज व्हाई आई एम वेयर आई एम. एंड इफ यू डोंट ओन योर फेलियर्स एंड यू गो इन कंप्लीट डिनायल, then you're just living in a delusion and you won't be able to make much out of something that you're pretending for. So acknowledging your failures, adapting with your failures, and absorbing those failures in a way कि आप उनसे सीख के नेक्स्ट टाइम जब आप फील्ड में आओ, ग्राउंड में आओ, मैदान में आओ, तब आप उससे बहुत बेहतर परफॉर्म करके इतना अच्छा अपना नाम बना लो कि आप अपने फेलियर्स को खुलेआम लिटरली
500 लोगों के सामने बता उसके बाद नहीं मैं बात सकते लोग नहीं अपनी वीकनेसेस और फेलियर्स नहीं बताते हैं। अच्छा यस what type of personalities appeal to you most to get interviewed by you? To get interviewed by me. Yeah. Achha, I personally believe every person has a story and every personality has something to share. हमने एक काफ़ी चीज़ों को ना स्टेरियोटाइप किया हुआ है कि अगर ऐसा बंदा होगा, ऐसा दिखता होगा, इस पोजीशन पे होगा या इस लेवल पे काम कर रहा है, only then that person fits the criteria of sitting on the seat next to you and sharing their experiences. ये चीज़ मुझे ज़्यादा हिट की है after being a mother. शादी के बाद भी करती है. Obviously you have to adjust to challenges. Professionally भी घर की चीज़ भी आपको साथ लेके चलनी होती है. But after being a mother, मेरी काफ़ी empathy बढ़ गई है with working mothers. जिनको नहीं मिला तो मुझे कंप्लेन लोगों से यही है, काफ़ी औरतों को स्पेशली मैं ये कहूँगी, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ घर पे बैठे हम बच्चे संभाल रहे हैं एंड देयर इज नथिंग मोर दैट वी आर डूइंग. बट ट्रस्ट मी, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपके अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपके ऐसी आपके अंदर पावर है जो आप साथ लोगों को साथ लेके चल रहे हो. सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे यही होते हैं जो मेरे सामने गेस्ट होते हैं उसका सिर्फ कैलिबर वाइज एक्सपीरियंस वाइज या एक पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चलो ठीक है वेल एंड गुड इफ वो टेक मार्क कर रहे, बट इवन देन आप मुझे किसी रैंडम बंदे के साथ भी बिठा देंगे तो मैं उससे कोई ऐसी स्टोरी कोशिश करूंगी कि बाहर निकले जो बाकी लोगों के लिए रिलेटेबल हो. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक. मैं कभी हमेशा सिर्फ बड़े नामों की यूज़ नहीं लेके बड़े नाम है तो इनका तो कुछ हो. They should be inspiring enough. Yes, and I think every person has a story जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है. लोग बस बात नहीं करते. मैं कोशिश करती हूँ तो बात करो. What mistakes you have made along the way and how did you manage to cope up with them? Oh God, this is going to take a while. What mistakes have I made along the way? Yeah, first and foremost, I chose the wrong field for myself. And that was before I got into media. I decided to become an architect. And before that, even before that, when I was doing my O-levels, I wanted to become a doctor. Okay. And those failures taught me that, and those mistakes, and those failures taught me that I wasn't cut out for it. And मेरे अंदर हमेशा से एक आर्टिस्ट को था, because मैं डिफरेंटली सोचता था चीज़ों के हवाले से, डिफरेंटली उनको एक्सप्रेस करता था, लफ्ज़ों के जरिए नहीं करता था, आर्ट के जरिए करता था, या फिर ड्राइंग हो, या फिर collection of different types of stones हो, या फिर photography हो, या फिर it was different forms of art every time. And then I did some poetry as well. And then I decided, because of the scope of the field, to go into an art school for architecture. तो architecture के अंदर एक career security ज़्यादा नज़र आ रही थी, और उसके अंदर एक scope ज़्यादा नज़र आ रहा था. It was technical and at the same time art as well. But as soon as I entered the institution, I realized that I wasn't cut out for architecture as well. मुझे तो लाइनें देख के मतलब कि चक्कर आता था. And I was more of a design का बंदा. I was more of a product design person. Then I was more of a communication का बंदा. Because the teachers and the courses that I was getting over there, मुझे यही सुनने को मिला कि तुम इन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर हो. तुम्हारी presentation skills, तुम्हारी communication skills, हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइन आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत क्लियर है. आर्किटेक्चर को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी. So I was not really putting my heart into it, and that mistake took me 3 years to realize. I won't say I wasted my time there, but I was not supposed to be in that particular batch, that particular career for that matter. So फिर आर्किटेक्चर से ड्रॉप आउट करने के बाद I came back, and another mistake that I made was get into another school which has somewhat similar sort of degree or something. अब वो पेरेंटल प्रेशर कहते हैं आप उसको, या फिर बुजुर्गों की तरफ से था कि यार आर्किटेक्चर से ही अगर निकल गया तो इस तरह की चीज़ है. I made that mistake, but I soon realized that I didn't want to do it, and I put my foot down and told my father, okay, I'd rather not go into that again. And then I did my BA, and then I did my masters in journalism. उसके बाद जाके मैंने अपने चैनल के अंदर बहुत गलतियाँ की हैं, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गया हूँ, मैं गलतियाँ करके सीखा हूँ, लेकिन वो मोर लाइक डिलिबरेट अटेम्प्ट्स थी, जिसके अंदर मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू गेट ऑन टू नेक्स्ट फेज. सो आई वेंट इनटू सेट डिजाइनिंग, आई वेंट इनटू ट्रांसमिशन, आई वेंट इनटू प्रोडक्शन, आई वेंट इनटू editing, I went into all those things which I did not know anything about. So I did make a lot of mistakes. I learned those things the hard way.
even to the point of getting humiliated by my father in front of so many people. And I grew through that, and now when I sit here, I can very confidently, speak about all those things and say, I've been through that. And वो experience काफी authority दे देता है, कमांड दे देता है बाकियों के ऊपर कि मैं इस चीज से गुजरा हूँ, मैं इस चीज से ठोकरें ही खा और सीख लिया ना, कम से भी नहीं गुजरा, तो मैं सीखने के बाद अब बोल सकता हूँ उससे कि इसको कैसे करें। अच्छा, एक सवाल पूछूं एक्स्ट्रा, मतलब इसी से पूछ सकते हैं ना? ये बाकी मिस्टेक्स तो हो जाती हैं, अगर ऑन स्क्रीन मिस्टेक हो जाए व्हेन यू आर गोइंग लाइव सिटिंग विद गेस्ट, उसकी रिकवरी कैसे होती है? That's what I teach my new anchors as well, कि ऑन स्क्रीन मिस्टेक के बारे में अगर किसी को पता है वो तो सिर्फ आप, आपके व्यूअर को नहीं पता कि आपने गलती की है। आपका व्यूअर तब एस्टैब्लिश करता है, रजिस्टर करता है जब तक आप उस पे पॉज नहीं करते, जब तक आप उसको नोटिस होने नहीं देते। So on screen mistakes can only be recovered and covered if you do not take a pause and carry on by getting on to the actual point. So if you've made a mistake, the next thing you say is what matters. Very confident. उसके फौरन बाद जो आप बोलोगे वो उसको कवर भी करेगा, करेक्ट भी करेगा और आपकी पिछली गलती को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा। Nice. So those things need to be covered instead of realizing, oh shit, मेरे से गलती हो गई है। तो उस पे पॉज लेके आप व्यूअर को सिर्फ बता नहीं रहे हो, आप एस्टैब्लिश कर रहे हो कि आप गलती करने वाला है। उसके बाद आपका ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है व्यूअर के माइंड के अंदर, और आपकी जो बिलीवेबिलिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें तो अपनी गलती नॉलेज की। तो बीइंग ऑन स्क्रीन नीड्स सम सीरियस ओवर कॉन्फिडेंस एज वेल कि मैं हूं तो इंसान, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं आपको मानना पड़ेगा। मुश्किल है। ओके। So that takes a lot of command. Okay. What would you say is the most difficult part of your job? Time management. Time management. I think अभी भी perfectionist तो नहीं हूँ, struggle करती हूँ, daily basis पे struggle करती हूँ। And I think आधे सारा लोगों को मसला ये होता है, आप independently बड़े कम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं जिनके एक्शंस का अपने घर वालों या फैमिली वालों पे कोई रिएक्शन ना हो। I am dependent on my family. My actions reflect upon my family, so I have to be very careful. मुझे उनको भी साथ लेके चलना होता है, मुझे काम को भी साथ लेके चलना होता है। कभी भी उस क्रेजी लेवल पे ऑब्सेशन ही बनाई कि बाकी सारे साइड पे हो जाए, मैंने यही काम करने और उसी में लग जाऊँ। I wasn't tuned like that. I'm not tuned like that. I don't work like that. मुझे अच्छा लगता है if everyone with me is involved in my work. मोटिवेशन भी बड़ी मिलती है। There are times जब आप खुद बड़ा डाउन होते हो, लोगों को लग रहा होता है कि everything is going okay in your life, आप तो बड़ा कर रहे हैं, especially जैसे सोशल मीडिया से लोग जज कर रहे होते हैं कि okay everything is great, माशाल्लाह everything is perfect. बुरी नजर भी इसमें लगती है। हाँ, बुरी नजर लगती है। वो भी बड़ा माइंड में रहते हैं, but not everything like that, not everything that glitters is gold. मुझे अपने करियर में मतलब उस तरह से याद है जो लोगों को लगता है when I was doing really well, मतलब मेरा मॉडलिंग भी चल रही थी, मेरे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पे लिटरली टाइम बहुत कम होता था और लोगों की माइंड होगा एवरीथिंग इज ओके, बट दोज वर द नाइट्स जब मैं बड़ा टेंशन में सो रही, पीस ऑफ माइंड नहीं होता। सो आई थिंक ये एक चीज़ बड़ी होती है। तो I would want my people to be involved in my work, and that's my mantra. And I think especially females को ही कहूँगी, आपके लिए इसी तरीके से काम करेगा अगर आप सब चीज़ों को, सब एस्पेक्ट्स को अपने साथ लेके चले। अब जैसे काफियों का होता है कि विद किड्स यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, शादी के बाद आपकी चीज़ें छूट जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और कल को फिर आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, ये एक्सक्यूजेस रीजंस आपके साथ नहीं होंगे। सो जो है जैसे उसको ओन करें, उसके साथ काम करें ना। अब जैसे हम माय सन माशाल्लाह जो बड़ा वाले इज 2.5 years old, बट बचपन से he was 3-4 months हमने काम स्टार्ट किया था, he would go with me, मैंने कभी उसको वो नहीं किया, साथ जाता था, हम काम करते थे। एंड बल्कि मेरे रूम में उसका एक छोटा सा कॉर्नर था, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ती है। अभी भी स्ट्रगल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, how I can motivate others to do what they really want to do and continue doing it amongst all the failures and struggles and challenges that you face. सबसे पहले तो ये excuses बनाना सबसे आसान है। I mean, whether it's your family, whether it's your friend, whether it's your own skill set, whether it's your personality traits and characteristics,
अगर आपने हल्का सा भी नहीं करने का आपको एक सोच चाहिए ना, तो आपके पास बेतहाशा एक्सक्यूजेस होंगे एंड यू कैन कम अप विद दोस टू टेल द वर्ल्ड व्हाई यू नॉट डूइंग इट, लेकिन अंदर अंदर से आपको पता होगा कि आपने अपने आप से धोखा किया. So be honest with yourself. If you really want to do it, then don't do it for the world. Don't do it for what people will say. Don't do it for उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसको कैसे देखेंगे, वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे, रिजेक्ट तो नहीं करते, मुझे inferior तो नहीं फील कराएंगे. If your complexes are triggered because of what people say, then you're not being honest with yourself. If you're doing it for yourself, and अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी, ये चीज़ करके मैं ग्रो करूँगा या करूँगी, और ये चीज़ करके मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो मुझे लगेगा आई एम डूइंग जस्टिस टू माय एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस वाला लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इट्स वेरी वास्ट. लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा इस दुनिया में होने का मकसद पूरा होता है एक चीज़ करने की वजह से, if that's how passionate you are about something, then that is your something, and then you stick to it. Then you don't worry about what people are saying and how they're approaching you and what they are responding to, because that is के अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं. उन्होंने उसको कवर करने के लिए किसी और को कुछ ना कुछ जानना होता है. So they doing it to cover their own flaws, their own mistakes, their own failures, and you should probably, to make yourself feel better, you should pity those people. You should pity those people कि उनको ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनको अपनी गेम नहीं मिलती है. लेकिन अगर आपको अपनी चीज़ के बारे में पहचान हो चुकी है, खुदा का वास्ता किसी और शख्स की वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज ना करने देना. छोटा छोटा बेशक, लेकिन लगे रहना. फेलियर टू फेलियर टू फेलियर इज गोइंग टू मेक यू अ बिगर पर्सन. अगर रोड इतनी स्मूथ है और आप बहुत आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच रहे, इसका मतलब ये कि उस मंजिल ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं. You haven't been polished, you haven't been rushed out. The best of you could not come out because everything was so easy, everything was hunky-dory. लेकिन अगर रोड मुश्किल है, इसका मतलब ये है वही रोड. इसका मतलब ये कि उसी रोड पे आप बेस्ट अपना निकाल सकोगे, उसी रोड पे आप रगड़ा सकोगे, उसी रोड पे आप पॉलिश होगे, और आखिर में जाके उसी रोड से गुजरने के एंड में जब आप पहुंचोगे और आप अचीवमेंट को मार्केट कर सकोगे, एडवर्टाइज कर सकोगे, फ्लॉन्ट कर सकोगे कि मैं मुश्किल रोड से यहाँ तक पहुँचा. एंड उस मुश्किल रोड से गुजरने के बाद ही आपकी कोई एक कमांड बनेगी चीज़ों के ऊपर, आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, एंड पीपल आर गोइंग टू ask for your opinion because you've been through the toughest. So don't avoid the toughest, don't avoid the criticism, don't avoid the challenges. Get into them because that is where you will achieve what you want to achieve. If you're looking for a smoother road, an easier road, an easy path, a shortcut, आप चले जाओगे, आप पहुंच जाओगे. फिर इतना बता दो कि आप बहुत शैलो तरीके से वहाँ पहुंचोगे और आप उसको फ्लॉन्ट नहीं कर सकोगे. Because there's nothing to flaunt. आप बहुत आराम से पहुंचोगे. So take the toughest road. Take the most difficult challenge, take something that makes you uncomfortable, लेकिन आपको पता है कि अगर इसको मैंने अचीव कर लिया, बड़ा मजा आएगा. So you should adopt such a lifestyle and such an approach towards your passion. वो career oriented हो या फिर वो बेशक एक human satisfaction के level पे हो, you should not give it up because it's slightly difficult. सब कुछ तो कह दिया. Like obviously you concluded it very nicely. सब कुछ आपने उसमें कर दिया. मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सा छोटा सा फिर एक बस एडवाइस दूंगी जितने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं. आप सबके पास स्किल है, आप सबके पास टैलेंट है, यहाँ पे और पॉलिश हो रहे हैं और सीख रहे हो, काफी कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से. एक चीज जो नहीं छोड़नी वो यहाँ का क्राउड है. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस. अभी शायद आप लोगों को ना भी समझ आए. आप जब एक इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं ना, तो लेक्चर असाइड जो लेक्चर में चीजें सीखी है वो तो आप सीख रहे हैं, आपका स्किल एनहांस हो रहे हैं, लेकिन the whole experience of coming, interacting with these talented people जो आपके साथ बाकी students हैं, your management, आप इनसे वैसे ही काफी कुछ सीख के जा रहे हो. And eventually in your practical life, this experience is going to take you to places. ये बहुत मैटर करता है. तो इन लोगों को, इन दोस्तों को मत छोड़े, इनसे कांटेक्ट में रहिएगा. ये भी बहुत बड़ा स्किल होता है. लोग कहते हैं ना कल को जब आगे चले जाते हैं तो बड़े बिजी, भाई दोस्त छुटते जाते हैं, दोस्तों के लिए टाइम नहीं रह रहा. क्यों नहीं रह रहा? आप मैनेज नहीं कर रहे. तो आपने इन सबको, इस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके चलना. थैंक यू.